खबर शामिल करते हैं ब्रिस्टल से। ब्यूरो चीफ टुडे न्यूज़ राना मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक राना बशारत अली खान नस्ल परस्ती और नौ आबादियाती विरासत के खात्मे के लिए आलमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर। जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के चेयरमैन राना बशारत अली खान ने अफ्रीकी नस्ल के लोगों के आलमी अशरे के इख्तिताम के मौका पर नस्ल परस्ती और तारीखी नाइंसाफ़ियों के खात्मे के लिए एक पुरअज़म आलमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने अफ्रीकी नस्ल के लोगों के हकूक़ के फ़रोग़, इंसाफ और तरक्की के लिए एक जामिया आलमी हिकमत अमली को अहमियत को उजागर किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो 60 से ज़्यादा ममालिक में 1 लाख से ज़ायद कारकुनान के साथ काम कर रही है, आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए मुसलसल काम कर रही है और तंजीम की पॉलिसी खुद मुख्तार और गैर जानिबदाराना रहकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है ताकि दुनिया भर की तमाम मजलूम और पसमानदा तबकात की आवाज़ को नुमायां किया जा सके। Rana Basharat Ali Khan urges global unity to combat racial discrimination and honor the International Decade for People of African Descent. Geneva, Switzerland. Rana Basharat Ali Khan, chairman of the International Human Rights Movement IHRM, has issued a profound call to action on the conclusion of the United Nations International Decade for People of African Descent. Highlighting the initiative's goals of justice, recognition, and development, Khan emphasized the urgency of collective global efforts to address systemic racism and the legacies of colonialism that still affect millions. Speaking on behalf of the IHRM, which operates across 60 countries with a network of over 100,000 activists, Khan underscored the organization's commitment to advancing human rights for all, particularly for those impacted by racial discrimination. He noted that while significant strides have been made, the persistent inequalities facing people of African descent worldwide are deeply concerning. We must not only celebrate the resilience and achievements of African descent communities, but also redouble our efforts to dismantle structural barriers and discriminatory practices, said Khan. As part of the decade's accomplishments, several nations have introduced policies to address racial disparities in critical areas, including law enforcement, education, and health care. Khan urged more countries to adopt comprehensive frameworks that guarantee equitable access to opportunities and resources, echoing the UN's recent calls for transformative racial justice agendas that address the legacies of enslavement and colonial injustices. Khan's message aligns with recent UN recommendations, including the need for action plans that include reparatory justice, socioeconomic protections, and national awareness campaigns aimed at confronting racism in all forms. Through the IHRM's efforts, Khan reaffirmed the organization's pledge to support international human rights standards and to act as a voice for those marginalized by race-based discrimination. This statement is part of the IHRM's broader mission to promote human rights through global activism, independent from external funding, to ensure accountability in the fight against all forms of inequality.